ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਪਰਦੇਸ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਪਤਾਨ ਸਿੰਘ ਹਾਜ਼ਰ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਪਰਟ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਤੋਂ ਮਿਸਟਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਬਾਲਨ। ਹੈਲੋ ਸਰ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦੀ ਸ਼ੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਜੀ ਵੈਰੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗੈਸਟ ਅੱਜ ਦੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਜੀ ਇਹ ਸ਼ੋ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਹੇਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਡਮ ਜੂਲੀਆ ਨੇ ਜੀ AIBI ਕਾਲਜ ਤੋਂ Head of Recruitment. Hello ma'am, welcome to the show. Hello and namaste. And ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀ ਫਾਬੀਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ Chief Executive Officer ਇਸੇ ਕਾਲਜ ਦੇ। Hello ਜੀ, welcome to the show. Hello, namaste, and thank you for having us today. ਜੀ ਸੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸ਼ੋ ਦੀ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਪਰਟ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਰ ਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਕਿੰਨਾ ਕਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ पंजाब बोर्ड या हरियाणा बोर्ड के स्टूडेंट्स भी वरीड है ने, की लगता है? देखिए ये बात तो सच है इसमें कि भी नॉर्थ इंडिया के लिए कहीं ना कहीं हाई कमीशन बड़ी स्ट्रिक्ट हुई है एंड रीजन बिहाइंड दिस द फ्रॉड डॉक्यूमेंट एंड द फ्रॉड फंड्स। तो दैट्स द रीजन वी स्पेशली इनवाइट टू द कॉलेज। हमारा सक्सेस रेट अप्रोक्स आप कह सकते हो बहुत अच्छा है और एम्बेसी अभी भी ओपन है, स्टिल दे आर गिविंग द वीज़ा बट ओनली टू द जेन्युइन स्टूडेंट्स। तो AIB कॉलेज को हम बहुत अच्छे तरीके से प्रमोट करते हैं एंड रेस्ट यूनिवर्सिटी से एज वेल। तो स्पेशली आज ये लोग हमारे पास आए हैं तो टीवी शो पे हैं और साथ साथ में ये 26 मई को विजिट करें चंडीगढ़ ऑफिस में 4:30। अगर आप AIB कॉलेज से मिलना चाहते हैं तो हायर एजुकेशन है, बैचलर प्रोग्राम है इनके पास, इंटरनेशनल बिजनेस में, इंटरप्राइज मैनेजमेंट सिस्टम एंड साइबर सिक्योरिटी। तो अगर आप भी ऑन स्पॉट असेसमेंट चाहते हैं तो यू कैन विजिट टू अस ऑन 26 मई एट 4:30 चंडीगढ़ ऑफिस सेक्टर 35C। सक्सेस रेट बहुत हाई है कविता। मैं जैसे बताया नॉर्थ इंडिया के लिए थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है, इसमें तो डाउट ही नहीं है, ठीक है, बट जेन्युइन एजेंट और जेन्युइन स्टूडेंट्स दोनों का कॉम्बिनेशन स्टूडेंट अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचता है। Okay. तो यही एक रीजन है कि जैसे हम वी आर द एरी मेंबर एज वेल एंड इवन कि हमने रिटर्न में हाई कमीशन को दे रखा है कि वी विल नेवर डू एनी फ्रॉडुलेंट थिंग्स। दैट्स द रीजन वी हैव द गुड सक्सेस रेट ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਅੱਜ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕਾਲਜ ਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆਏ ਨੇ, ਸਿਡਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੇਟਡ ਹੈਗਾ सिडनी एंड मेलबर्न। ਹਾਂ, ਤੇ ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਵੀ ਡਿਮਾਂਡ ਰਹੀ ਹੈ। डेफिनेटली स्टूडेंट हमेशा बोलता है कि जी मेलबर्न जाना है, सिडनी जाना है, हाँ। रेस्ट पार्ट में भी जाते हैं और AIB को हम बहुत अच्छे तरीके से प्रमोट करते हैं क्योंकि ये हमें बहुत अच्छी सर्विसेज देते हैं। 48 आवर में ऑफर लेटर, विद इन 7 डेज के अंदर GT अप्रूव होके अपना COE आ जाती है, तो उसके बाद फाइल लॉन्च होनी है और सक्सेस रेट भी ठीक है और कॉलेज भी अच्छा असेसमेंट लेवल 2 में है और प्रोग्राम बहुत अच्छे हैं जैसे साइबर सिक्योरिटी से और रियली कमांडेबल प्रोग्राम। जी, so Julia, what is your experience about our Punjabi students, our Indian students? We have been working with Indian students since January last year, and Western Overseas has been enrolling successfully several students. We never had any issue because our representative Western Overseas has been giving to students the right guidelines, and they have been supporting the student through the GT process, and we had several visas successful granted. So far our experience has been very good. And what is your role in AIBI? So my role in AIBI Higher Education, it's getting in touch with agents and recruiting students overseas. Obviously students have many questions and they can approach us as institution every time, but obviously Western Overseas has established experience and they have different branches in India, and they can visit any branch in India and all the consular can provide the right information. We will be visiting the branch in Chandigarh on the 26th of May at 4:30. Feel free to come and talk with me and Fabio. And Julia, we have the office in Melbourne as well. You have an office in Melbourne as well? Yeah. So I understood that you mentioned we have two different campuses. Yeah. One is in Sydney and one is in Melbourne. Both campuses are in the heart of the CBD of the two main cities. Students can approach again all the time Fabio and myself. If they need information, if they need direction. Yeah. We understand that for many students, Australia is the first time abroad, and initially they need to
feel comfortable. So we welcome all the students to approach us at any time. And while they are still in India, they can approach obviously Western Overseas, and they and the agency can share all the information they need. ਜੀ 26th ਆਫ ਮਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਫਿਸ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜੂਲੀਆ ਮੈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੀ ਫਾਬੀਓ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਚੀਫ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਆਫਿਸਰ ਹੈਗੇ ਨੇ AIBI। ਸੋ ਵਾਟ ਯੂ ਗੋਇੰ ਟੂ ਸੇ ਅਬਾਊਟ AIBI? Well, AIBI is a young business that started operations during COVID-19. So what we did is we saw an opportunity to create unique qualifications in the higher education space. So we specialize and we are willing to keep growing as a business just by creating unique courses and qualifications, and not just doing what every other provider is doing, which is it's a huge market, it's a lot of competition there. So what AIBI does is we focuses on qualifications that are unique and lead to career pathways to students who are genuine. We also focus on working with genuine agents and agents that we can trust. And the relationship to us is a long-lasting relationship. We're looking to build businesses, but also to establish a healthy relationship between agencies, students, and the provider. So ਫਿਲਹਾਲ ਜੀ ਫਾਬੀਓ ਚੀਫ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਆਫਿਸਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ AIBI ਕਾਲਜ ਜੋ ਕਿ ਸਿਡਨੀ ਐਂਡ ਮੈਲਬੌਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਂਡ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ। Definitely, they are here to tell the students about the program, about the college, about the education system, about the entry criteria, about the GT. So what special programs are you offering to the students? So we offer niche qualifications. So what is the minimum requirement to how to get an admission? So for the English part, student for the Bachelor of International Business and the Bachelor of Enterprise Management System, they should provide an IELTS 6 overall with no band below 5.5, and the equivalent PTE is 52, no band below 48. Sorry about that. For cybersecurity, the Bachelor of Cybersecurity, which is our new baby. First intake for the Bachelor of Cybersecurity will be September. We require an IELTS overall 6 with band no below 6. And for the PTE, is the same. So 52, no band below 48. Sorry about 50, that. 50, yeah. So Fabio students are interested more in diplomas or degree? Students are interested, initially students are interested more in higher education programs. Students who are coming from regions like India, Nepal, they're very interested on studying or starting a career in Australia by studying in a higher education provider or a university. Diplomas is an option when you are in Australia, but I strongly recommend to focus on higher education programs because they lead to I guess more professional pathways later on. So any kind of scholarship are you providing or not? Yes, there are a few scholarships that we are currently promoting for the September intake. Julia, would you like to share this? Yes, sure. For the Bachelor of International Business and the Bachelor of Enterprise Management System, we are currently offering for September intake 30% scholarship. And for the Bachelor of Cybersecurity, we are offering a scholarship up to 35% scholarship. Now, the average scholarship offered for the Bachelor of Cybersecurity is 20%, but as I mentioned, students can build up to 35. We offer a 5% scholarship for female students because we understand that in the cybersecurity space, we need more women, and an additional 10% scholarship for academic merit. The duration of the 3 bachelors is 3 years. Each year is split in 3 trimesters, and each year student will study 8 units per year. Usually the trimester it's split again in 3 units the first trimester, 3 units the second trimester, and 2 units the last of the year. And just to add a little bit extra information on what Julia said. So when students come to AIBI Higher Education and study,
they're not only going to be learning about concepts and all the theoretical part, they're actually going to be implementing that knowledge by using real scenarios or real case studies. For example, if you study the Bachelor of Enterprise Management Systems, the students get the opportunity to practice in a real, by using a real ERP system. We use SAP systems, we use Odoo systems. What that means is that the students, all the knowledge they learn in the classroom, they actually go and implement it in the university or in the college as well. So it's a combination between theory and real practice. जी If I can add last thing about our qualification is that we offer during the second year an internship program. That's a great opportunity for students to connect with the industry, start to build a network, and also to gain some Australian working experience. ਬਿਕਾਜ਼ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਮਿਲ ਜਾਏ ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਡਿਪਲੋਮਾਸ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਯਾਨੀ ਡਿਗਰੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਰ, ਅੱਜ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਫਿਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਕੁਐਰੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ ਆਸਟ੍रेलिया ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। डेफिनेटली आज की डेट में जब से लाइक एक तो पीटी बड़ा फेमस हुआ, रीजन बिहाइंड दिस क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट वांट टू गो ऑस्ट्रेलिया। जी तो कनाडा के बाद ऑस्ट्रेलिया, या आप कह सकते हो ऑस्ट्रेलिया आज की डेट में आपकी तरफ जा रहा है जी। और हमेशा से फर्स्ट चॉइस रहा है ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि वेदर कंडीशन बहुत अच्छे हैं और इवन ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। जो बैचलर है वो 3 ईयर की है, किसी जैसे कनाडा में 4 ईयर की डिग्री थी या मैक्सिमम 3 ईयर 4 ईयर की भी होती है, लेकिन 3 ईयर की भी बैचलर है। तो कहने का मतलब ये है ऑस्ट्रेलिया ऑलवेज रिमेन द फर्स्ट चॉइस फॉर द स्टूडेंट्स। और अभी अगर आपका 12th के रिजल्ट्स मोस्टली सारे बोर्ड्स के आ चुके हैं तो AIB आपको वेलकम करता है। और यहाँ पे CBSE और ICSE बैकग्राउंड से अगर आप हैं तो वी नीड 60% इन मेजर सब्जेक्ट्स। तो मेजर सब्जेक्ट्स में अगर आपके 60% तो यू कैन गेट द एडमिशन इन द AIB कॉलेज। और अगर आप स्टेट बोर्ड से हैं तो वी नीड 65% इन मेजर सब्जेक्ट्स। तो यहाँ पे 60 और 65 और IELTS में 6 पैड नो लेस देन 5.5 और साइबर सिक्योरिटी के लिए हमें चाहिए 6 ईच और PT में 52 नो लेस देन 52। ਅੱਛਾ, ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੁੱਲ ਆਵਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕੰਮ ਦੇ ਰਾਈਟ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਵਧਿਆ। देखिए वो तो अगर ये तो ड्यू टू द कोविड रहा है, ड्यू टू द कोविड दे हैव द लेस मैन पावर, दैट्स द रीजन they offer to each and every one student to work full time, but now capping दोबारा आ रही है। Now student can work up to 24 hour per week और कह सकते हैं कि 48 hour per fortnight। पहले ये बिफोर कोविड इट वाज 40 hour per fortnight। तो अब ये 8 घंटे का और इजाफा मिल रहा है, मतलब पर वीक 4 घंटे एक्स्ट्रा, 20 से 24 हो गया है। तो देखिए आप पढ़ने के लिए जा रहे हैं, ड्यू टू द कोविड इट हैपेंस कि आपको फुल टाइम अलाउ था। नाउ अब आपका जून में स्टार्ट हो चुका है कि भाई आप 24 आवर पर वीक और कह सकते हैं 48 आवर पर फोर्टनाइट काम कर सकते हैं। और इफ स्पाउस वीजा पे आप जा रहे हैं मास्टर्स प्रोग्राम में तो यस आपका डिपेंडेंट जो है ही और सी कैन डू द फुल टाइम। जी, सो ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਟਰਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਂਡ but AIB is offering only the UG program, bachelor's program। I can add something on that. So we are planning to open our first master in term 1 2024. So the students from India soon will be able to approach us, because more of the students they are interested in masters, and with spouse they are interested to go Australia. So from next year we will be able to advertise and promote also a master degree for the student coming from India। Great। ਸੋ ਦੇਸ਼ ਪਰਦੇਸ਼ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਐਂਡ ਮਿਸਟਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਬਾਲਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਜੀ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਤੋਂ, ਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਐਕਸਪਰਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਟ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਫਾਬੀਓ ਐਂਡ ਜੂਲੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਂਡ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੋ ਵੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਸ ਵੇਲੇ। So what about the embassy role, like how long the embassy is taking time? So ਤੁਸੀਂ आंसर करना। देखिए it depend upon 10 days में भी रिजल्ट्स आ रहे हैं, 15 वर्किंग डेज में भी आ रहे हैं, और यू कैन से 30 वर्किंग, डिपेंड अपॉन द वॉल्यूम और डिपेंड अपॉन द एम्बेसी मोड। बट यस आज की डेट में बड़ा पॉजिटिव है।
So Julia, यहाँ फंडिंग की बात हाँ, जरूर करिएगा, जी, इट्स okay. नेसेसरी. कॉलेज को रिक्वायर्ड है 3 month old फंड्स, और इफ यू हैव द करंट फंड विद सोर्स देन डेफिनेटली अगेन आप एक्सेप्टेबल है. कोशिश है कि जो आपके स्पॉन्सर्स हो, आपके इमीडिएट स्पॉन्सर जो है फैमिली में, मम्मी पापा, ग्रैंड पेरेंट्स, मैटरनल पेरेंट्स, सिबलिंग और सेल्फ आप हो सकते हो. और अगर आपका अगर मान लो कोई आपको आउटसाइडर भी, लाइक आपको कोई फैमिली फ्रेंड या क्लोज रिलेटिव भी करे, तो 30% तक वहाँ भी एक्सेप्टेबल है. जी. So Julia, would you like to speak on a budget, like a fee structure? Yes, so with the current scholarship of 30% for the Bachelor of International Business and the Bachelor of Enterprise Management System, we can offer a tuition fee for the year around 15,000 Australian dollars, and this amount can be split again in 3 trimesters. Student will need also to arrange a health cover insurance, and they need also to show to the immigration that they can afford the living cost. For a quote in how much students should save to come and study with AIBI, I would recommend to get in touch with Western Overseas, and they can provide a detailed quote in how much students needed to put on the side or in their savings to come to Australia. So Australia, it's a great country, full of opportunity. Definitely. I moved to Australia as an international student. Oh. I joined an internship program with the AIBI Holding, and 8 years after, I'm still working with them as head of student recruitment. So if students, they have a good profile, they are serious about learning and working, I am sure that money in Australia won't be an issue. So Exactly. Fabio, anything you want to say? Yeah. So it's also, as we've been talking today, we see a lot of opportunities for international students when it comes to work. So in the beginning, to settle in, there are plenty of jobs in various industries such as hospitality, retail, constructions. They're really well paid, and it's proven that the students are able to self-sustain their living in Australia while they study. As part of our programs, we had the internship opportunity in the second year, so that opportunity brings a lot, or opens a lot of doors for international students. It could lead potentially to sponsor visas. It could lead to a permanent role with a big company. So the opportunities are there. The sky is the limit. I believe Australia is not only a safe place to live, but it's also a place where there are multicultural people from different parts of the world. You get to meet people from Italy, Colombia, India, Nepal, China. So it's a place where you have the option to live a very comfortable life full of new experiences and in a very safe and healthy space. ਜੀ. ਸੋ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਇਨਟੇਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੋਸਟਲੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਬਟ ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਇਨਟੇਕ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ AIBI कॉलेज ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋ ਸਿਡਨੀ ਐਂਡ ਮੈਲਬਨ. कविता, ये सितंबर इनटेक जो अभी रिजल्ट्स आया, इन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत बढ़िया है, क्योंकि नाउ दे विल डू द आइल्स, और सितंबर आपका वेट कर रहा है. मींस लाइक एक परफेक्ट मैच. आपको अगले साल फेब की वेट नहीं करनी पड़ेगी. मेजॉरिटी ऑफ द यूनिवर्सिटीज आफ्टर जुलाई आर प्रोवाइडिंग द फेब इनटेक. हियर इसी ईयर आप जा सकते हो 2023 में ही, और वो भी सितंबर इनटेक में. तो मतलब देयर विल बी नो गैप. Yes, exactly. So for September, we are still recruiting Pass Out 2022. That's a great opportunity. ਜੀ. ਸੋ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਐਂਡ 22 ਵਾਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੌਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ. ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ नहीं, 22 वाले भी जा सकते हैं. यस, 2022 वी आर एक्सेप्टिंग द एप्लीकेशन फॉर AIBI, और 2023 के लिए तो है ही है. तो 2022 पास आउट और 2023 पास आउट हमें अप्रोच कर सकते हैं फॉर AIB कॉलेज. ਜੀ. ਸੋ 2023 ਪਾਸ ਆਊਟ ਤੇ 2022 ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦਾ, ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੇ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ. ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਰ. ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੂਲੀਆ. Thank you. Thank you so much Fabio. Thank you very much for having us. Please come to see us at Western Overseas on the 26th of May at 4:30. We will be there. We'll be very happy to talk to all of you and clarify any information or provide any extra support if need be. Definitely. So ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਇਜਾਜ਼ਤ. ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ. ਧੰਨਵਾਦ.